Sameer Wankhede, the officer handling the probe in a case involving Aryan Khan, says that I stand by my investigation 100%. He says he's in Delhi for some work. The missing so-called witness Gosavi tells NDTV that he will surrender soon in Lucknow. Meanwhile, another witness who claimed that he was made to sign blank papers records his statement. Home Minister Amit Shah in Jammu and Kashmir says that there will be no talks with Pakistan, will talk to Kashmiris, he says. With the Shikara ride, no bulletproof shield and handshakes, Amit Shah's outreach on the final day of his visit. National Award-winning director assaulted. Horrific images of Prakash Jha after the ink assault in Madhya Pradesh. State Home Minister says assault is wrong, but what about you? Bajrang Dal claims responsibility. And superstar Rajinikanth gets highest film award, Dadasaheb Phalke Award. Son-in-law Dhanush wins National Award for Best Actor with Manoj Bajpayee. Kangana Ranaut wins National Award for Best Actor. Hello and welcome to NDTV 24/7. I'm Rohit Wellington. Let's begin with our top story. Sameer Wankhede, the Narcotics Control Bureau officer leading the probe into the case involving Shah Rukh Khan's son Aryan Khan, reached Delhi on Monday evening but denied that he had been summoned by any agency. At the airport, surrounded by reporters, Mr. Wankhede said that he is in the national capital for some work, and he told NDTV that he stands by his investigation. Do you believe you've conducted a fair and a justified trial, this investigation? Absolutely. How strongly do you stand by that? 100%. Sorry. Do you have something against Shah Rukh Khan? Do you have something against Shah Rukh Khan? All right, so that is Mr. Sameer Wankhede in Delhi. Let's go across to Sonakshi Chakravarti, who's been tracking his movements. Sonakshi, do we know what is Mr. Wankhede in Delhi for? The NCB officer Sameer Wankhede, who is handling the Aryan Khan case and the rest of the drugs case, is in the national capital. He landed a short while ago and he said that he is here for some other work. He specified some other work and stated that he has not been summoned and that there were no summons issued to him. Sameer Wankhede is in the national capital, yes, but a lot of questions posed to him. He made it very clear, saying that appropriate answers will be given to people and that he stands by the investigation in this entire drugs case involving superstar Shah Rukh Khan's son Aryan Khan and amongst others. He has also made one thing very clear. When I tried to ask him if he knew who Manish Bhanushali and Kiran Gosavi were, he gestured something like, I don't know. So Sameer Wankhede has a lot of questions to answer. He says that the allegations against him are baseless and that he is ready to face anything under the law. A lot of questions, allegations, accusations on Sameer Wankhede on corruption, bribery and forgery in the case involved. But Sameer Wankhede, that NCB officer, has to come clean on these questions now, which he has been caught into a political controversy and a political debate. All right, Sonakshi Chakravarti, we leave you there. Thanks very much for joining us with those details. Meanwhile, Prabhakar Sahil, who claimed that he was made to sign on blank papers, recorded his statement with the Mumbai police on Monday. Sahil has also made claims of payoffs to agency officer Sameer Wankhede. The NCB, however, has defended Sameer Wankhede, saying that he has an impeccable service record. NDTV Sohit Mishra spoke with Prabhakar Sahil. अराउंड 1:45 के बीच में मुझे कॉल आ गया किरण गोसावी जी का, प्रभाकर ऊपर आ जा, साहब बुला रहे तेरे को पंचनामा में साक्षीदार का साइन करना है। ठीक है, वैसे ही मैं ऊपर गया तीसरे माले पे, तो वहाँ पर देखा एक अधिकारी जो एनसीबी के अधिकारी रहते, वो मेरे पास है, ये पेपर है उस पर साइन कर। बोला सर ये ब्लैंक है। उतने में वहां से समीर वानखेडे जी बाहर आ गए, ये कर रहे तुला समझत ना काय नाही होत त्याला, कर। यहाँ से किरण गोसावी भी बोले करना है, काय होत नहीं। कम से कम 9 से 10 पेपर पे मेरा उन्होंने साइन लिया। तो समीर वानखेड़े ने भी कहा आपको साइन करना? हाँ, ये साइन लेने के बाद का वीडियो है, क्योंकि जब भी इनका आर्यन खान से वो बात कर रहे, बाकी के जो आरोपी थे उनको अलग से बिठाया, इनको क्यों अलग बिठाया? आर्यन खान को अलग से बिठाया था? अलग से बिठाया था, अलग चेयर पे। ठीक है।
और तीसरी बात, अगर वो पंच है तो उनके बाजू में बैठ के क्या कर रहे हैं? ये एनसीबी अधिकारी वालों ने ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था. Meanwhile, Kiran Gosavi, the private investigator whose photos and videos with Aryan Khan threw up multiple questions, has told NDTV that he will surrender in Lucknow. Asked why he was surrendering in Lucknow when the case has been filed in Mumbai and Maharashtra police are looking for him, he told NDTV that he feels threatened in the city. The police, meanwhile, in Lucknow say that they have no information about Gosavi. हेलो, हाँ, मिस्टर केपी गोसावी बोल रहे हैं. मैं सुनील सिंह बोल रहा हूँ एनडीटीवी से. एनडीटीवी से मैं सुनील सिंह बोल रहा हूँ एनडीटीवी से. ये आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उस संदर्भ में आपसे बात करनी थी. कल जो आपके बॉडीगार्ड ने बताया, अपने आप को सरेंडर करने जा रहा हूँ. आरोप करने सारे चीजों आ रहे हैं. आप सरेंडर करने जा रहे हैं? हेलो, कहाँ पर सरेंडर करेंगे? मैं लखनऊ में सरेंडर कर रहा हूँ अपने आप को. जी, लखनऊ में सरेंडर कर रहा हूँ अपने आप को. अच्छा, लेकिन ये जो आरोप लगा है आपके ऊपर, जो आपके बॉडीगार्ड ने बताया है कि आप पूजा डडलानी और ये सैम डिसूजा से मिले थे और 25 करोड़ की बात करनी थी, उसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाना था, इस पर क्या कहना है आपका? सब झूठे आरोप है. ठीक है, इसमें मैं तो पुलिस की मदद मांगूंगा कि पुलिस ने इसमें या कोई इंटेलिजेंस कमेटी ने इसमें जो भी है चेकिंग करके जो सच है वो सामने लाना जरूरी है. तो आप किससे मांग करेंगे ये? जी, जो भी प्रॉपर उसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मैं तो उनसे मांग करूंगा कि इसमें जो भी है तफ्तीश हो जाए और जो भी उसमें खुल के आ रहा है वो बताया जाए दुनिया के सामने. लेकिन जब आप कह रहे हैं कि सब झूठा है तो आप ऐसे भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. आप जब कह रहे हैं कि सब झूठा है तो भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? नहीं, भागे भागे फिर रहे सर. हमको बाहर से भी धमकी आ रही है, मुझे डिपार्टमेंटल भी धमकियां आ रही है. उनके लोग भी फोन करके बोल रहे थे 6 तारीख तक कि अंदर भी जाओगे तो तुमको मार दिया जाएगा, तुम्हारे साथ टॉर्चर होगा. किसके लोग बोल रहे हैं? यहाँ की फिक्र तो हर किसी को है ना. अच्छा, धमकी कौन दे रहा है? सर, मेरे पास नंबर है. मैं पुलिस स्टेशन में जैसे सरेंडर करूँगा मैं सब सामने ला दूंगा पुलिस स्टेशन. तो आज ही सरेंडर करने जा रहे हैं अभी या फिर बाद में करें? तो आप समीर वानखेड़े को कब से जानते हैं आप? समीर वानखेड़े को कब से जानते हैं? समीर वानखेड़े को कब से जानते हैं? मैं उसी दिन से 2 तारीख से. अच्छा, उसके पहले आप नहीं जानते थे? नहीं. ना कोई मुकदमा मेरे यहाँ लिखा हुआ उसके खिलाफ. मैं कौन किरण गोस्वामी है, किस मुकदमे में वांछित है, किसमें क्या है, मुझे नहीं पता. सेंटर होने कोई औचित्य नहीं होता. क्या आपको किसी ने फोन किया ये कहते हैं किरण गोस्वामी? और मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं. कौन किरण गोस्वामी, उसमें कौन XYZ कौन क्या है, मैं नहीं कह सकता. मैं नहीं जानता क्या बोला, मुझसे कुछ नहीं बोला. कितनी देर में सर सरेंडर करेगा? मुझे नहीं पता. वायरल हुआ है उसके बारे में क्या करें? मुझे कोई जानकारी नहीं है क्या है. सर, एक ऑडियो ऐसा वायरल हो रहा है जिसको कहा जा रहा है कि बढ़िया थाने में ही सरेंडर करेगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वो कौन करेगा, किसने कहा है, उससे पूछिए. मुझे नहीं पता. मुझे कोई जानकारी नहीं. Moving on to the other big story, Union Home Minister Amit Shah on Monday had a bulletproof glass shield removed before addressing a public gathering in Srinagar and told the crowd that he wanted to speak to the people directly. The Home Minister on the final day of his visit to Jammu and Kashmir said that there will be no talks with Pakistan. He would rather talk to people of Kashmir. A shikara ride in Dal Lake. Asking for a bulletproof shield to be removed from a podium as he addressed Panchayat members and later shaking hands with them. Home Minister Amit Shah wants to send a message that under his watch after abrogation of Jammu and Kashmir's special status, the security situation has improved on the ground. मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है. मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है. But the entire area around the convention center in Srinagar, where the Home Minister addressed Panchayat members, has been sealed off. Except Amit Shah's Shikara ride at Dal Lake is literally deserted for last 3 days as tourists are not allowed because of security reasons.
In a message to youth, Amit Shah spoke of wanting to have Kashmiri players in Team India. Ironically, on a day when the Valley reverberated firecrackers to celebrate Pakistan's victory against India in T20 World Cup. मेरा कश्मीर के युवाओं को एक निवेदन है, क्यों भारत की टीम के अंदर, क्रिकेट टीम के अंदर कश्मीर से कोई युवा न हो गई। कश्मीर के युवा में बहुत कुव्वत है। Home Minister also ruled out any possibility of talks with Pakistan as suggested by Kashmiri leaders like Farooq Abdullah. He said he would rather talk to people of Kashmir. फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। The opposition says there is a huge gap between Home Minister's claims and reality on the ground. अभी जम्मू और कश्मीर में 22% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, दी हाईएस्ट इन द कंट्री। यही अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2010 में सिर्फ 3% थी। आप खुद समझ सकते हैं डेवलपमेंट हुई है या डिस्ट्रक्शन हुई। During last 3 days of Home Minister's Kashmir visit, there was no sign of any follow-up to all parties meeting called by the Prime Minister in June on Kashmir. Amit Shah rather said he would like to engage with youth of Kashmir and wants to see new leaders in the valley. He blamed Farooq Abdullah and Muftis for all wrongs in Kashmir for last 70 years. In Srinagar, Nazir Masoodi for NDTV. Right, to Bihar now, where the RJD has mocked the Congress in a meme for calling all other parties B team of the BJP, with a line saying, won't defeat the BJP themselves, won't allow others either. Lalu Prasad, one of the oldest allies of the Congress, has hit out at it, just days ahead of a by-poll in which the two parties are contesting against each other. Lalu attacked Bhakta Charan Das, who's the Congress in charge of the state, asking whether they should concede seats for the Congress to lose. गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम. The RJD even tweeted attacking the Congress of being the B team of the BJP, refuting the Congress's claim. Beyond the current campaign, the backdrop of Lalu Prasad's comments is the Congress's post-strike rate compared to the RJD's in the assembly poll last year. The Congress is playing down Lalu's attack. RJD और कांग्रेस के रिलेशन बहुत पुराने हैं, क्योंकि राजनीति में कहना मुश्किल है कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। इसलिए कोई भी बात करने से पहले उसको ज़रूर तौलना चाहिए। गठबंधन ज़बरदस्ती नहीं होता है, उसमें दोनों की सहमति होती है। The by-poll for Kushawar Astan was triggered by the death of a JDU MLA, and the Congress insisted on recontesting, despite losing to the JDU by over 7,000 votes last year. Senior leaders in both the RJD and the Congress concede that the public spat and the war of words will continue till the end of the by-elections later this month. But they also say, with leaders joining the Congress like Kanhaiya Kumar, there will definitely be a strain, and ultimately it might help the BJP-JDU combine. With Manish Kumar, Sunil Prabhu, NDTV. Right, time for a short break. Lots more on the other side. Stay with us. Welcome back. 20 months after the pandemic forced them shut, schools and colleges will reopen in Bengal from the 16th of November. Chief Minister Mamata Banerjee announced this on a day COVID numbers spiked across Bengal but dipped in Kolkata. আর একটা হচ্ছে স্কুল কলেজ খোলার ব্যাপারেও 15ই থেকে করে দাও। ঠিক আছে। তার আগে স্কুল কলেজগুলো পরিষ্কার করতে হবে, সেগুলো মাথায় রাখো। The 15th is a state holiday, so on 16th November, finally, it's back to school in Bengal. A phased reopening, classes 9 to 12 and college first, the rest later. The principal of South Point Senior School is certain even classes may be hybrid for a while. Of course, everything cannot go back to the normal immediately. It will have to be done in a phased manner, a hybrid mode possibly. So we may have to, continue with our online classes along with the on-site classes.
There are risks. Bengal's COVID numbers are up after the Durga Pujas from 619 on 5th October to 989 this Sunday. Other indicators too are worrying. But doctors say high-time education is put back on track. The way closure of schools has destroyed the basic premises of our development is going to be palpated years down, decades down. So we should be very, focused on keeping the program for school opening intact. What's not reopening is quarantine centers in Kolkata, which saw a dip in numbers in the last 24 hours. More than 50% of the people in Calcutta have already received second dose. We have to accept this as a part of life, because how many days we will run away from this. All eyes on vaccination for minors, of course. Why not wait for one jab at least before going back to school, some say. But they seem to be in minority. With G.D. Shankar, Monadeepa Banerjee, NDTV. To Madhya Pradesh now, where National Award-winning director Prakash Jha was assaulted and the set of his web series vandalized. The State Home Minister stopped short of defending the violence by Bajrang Dal men, but backed the right-wing group's demand to change the name of the web series. एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं। किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें, लेकिन आप जो गलती कर रहे हो आप पर क्या करें, विचार तो करो। Well, that's it on this bulletin from the entire team. Thanks for watching. Goodbye.